Yes, good morning, students. Welcome to the social science class. Yesterday we have done chapter number 5, part 1. Now, in the second part of the chapter, beta, we will do the importance of tides and waves and about the ocean currents. So, let us start, beta. See, firstly, we will discuss about the importance of tides and waves. See, what is tide? Tide means twice during a day at more or less regular intervals, the water of the seas and oceans rises the fall and falls alternately. Now, the rise and fall of level of water during tides is beneficial to us. How it is beneficial? See, high tide raises the water level close to shores, and this enables the ships to move to the harbors. बेसिकली हाई टाइड की वजह से वाटर क्या है, शोर्स की तरफ बहुत जल्दी आता है और दैट मीन्स जो शिप्स हैं ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर पाते हैं. एंड टाइड्स ऑल्सो क्लियर द माउथ ऑफ द रिवर्स फ्रॉम द सेडिमेंट्स. नाउ सेकेंड इज fishermen move out to the sea during low tide early at dawn, and they return the shore with huge catch of fish during high tide. बेटा during high tide fish जो हैं ज़्यादा close हो जाती है और fishing उनके लिए बहुत benefit रहती है. So high tide is beneficial for the fishermen also. And next is the exchange of water during high and low tides between the sea and shore makes the water rich in nutrients. This benefits the ecosystem in the coastal areas. In coastal areas basically beta high और low tide इन दोनों का जब exchange होता है then it means a benefit for the ecosystem. A large variety of fish is found in plenty during high tides. Okay, now see, the force of waves and tides can be harnessed to generate electricity, beta, and this is known as the tidal energy. What is tidal energy? The force of waves. Waves की force को use किया जाता है and tides can be harnessed to generate electricity. And this renewable resource can solve energy crisis also. Okay, it can help us to conserve the exhaustible non-renewable fossil fuels. Now, the next part of the last part of the chapter is ocean currents, beta. See, the oceans of the world are interlinked. They merge naturally with each other, and the world's huge expanses of water are thus continuous. See, beta, some geographers have, however, divided them into four major oceans. See, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, and the Arctic Ocean. They have a number of seas, gulfs, and bays along with their margins. And the ocean around Antarctica is termed by some geographers as Southern Ocean. When winds disturb this vast stretch of water and drive a mass of water over large areas, ocean currents are formed. See again, when wind disturbs the vast stretch of water and drive a mass of water over large areas, then ocean currents is formed. That means basically wind की direction की वजह से wind जो है disturb करती है basically ocean के water को and then drive a mass of water over large areas, and they flow on the surface constantly in a definite direction. Basically ये surface पे ocean के surface के ऊपर flow करते हैं and in a definite direction, so they are also called the river of the ocean also. Okay, see, the ocean currents are divided into two types, beta. Namely, first one is warm ocean currents and second is cold ocean currents. See, the warm ocean currents develop in the equatorial regions and the cold ocean currents originate in the polar regions and flow towards the warm equatorial waters. Now, see, the rotation of the earth deflects the direction of the winds and ocean currents. Basically, बेटा rotation of the earth बहुत इफेक्ट करती है direction of wind को भी. Basically,
ओशन करंट्स को भी, टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर. सो दिस इज नॉन एज कोरोलिस फोर्स. लिसन अगेन. द रोटेशन ऑफ द अर्थ डिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ winds and ocean currents to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. So this is known as Coriolis force. Now the general ocean circulation is thus clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. बेटा इसका जो सर्कुलेशन है जनरल ओशन सर्कुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज है एंड सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज. सो the ocean floor is not a flat surface. It has submarine ridges and trenches also. It has volcanic peaks that protrude on the surface as islands. Now, see the significance of the ocean and ocean currents. क्या benefits हैं इसके? See, first one is the ocean acts as natural waterways and are the arteries of international sea trade and the transport. बेसिकली ये नेचुरल वाटरवे है जिसे किसी ने बनाया नहीं है एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेनिफिशियल है. दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल. दैट मीन्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है. एंड द ओशन करंट्स असिस्ट इन फास्टर मूवमेंट ऑफ द शिप्स. और ओशन करंट इसमें कैसे हेल्प करते हैं? फास्टर मूवमेंट ऑफ द शिप्स. सी द सेकेंड पॉइंट. The oceans and the sea have a moderating influence upon climate. Moderating influence कैसा रहता है बेटा क्लाइमेट पे? सी बट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस मे बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द करंट्स. जो क्लाइमेट है बेसिकली करंट्स पर डिपेंड करेगा फ्लोइंग पास्ट इट. वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज वाइल कोल्ड ओशन करंट्स लोअर द टेम्परेचर ऑफ द एरिया. नाउ थर्ड पॉइंट. वार्म ओशन करंट्स ड्राइव मॉइस्चर फ्रॉम द सी टू द लैंड. वार्म ओशन करंट क्या करते हैं बेटा? मॉइस्चर को सी से लैंड तक लेके आते हैं, ब्रिंगिंग रेनफॉल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट एंड कोल्ड करंट्स ऑन द अदर हैंड में रिजल्ट इन डेजर्ट लाइक कंडीशन. अगर कोल्ड करंट्स हैं तो बेसिकली उसकी कंडीशन किस टाइप के रिजल्ट होंगे? डेजर्ट लाइक कंडीशंस नियर अबाउट. नाउ फोर्थ इज warm ocean currents like the North Atlantic drift help in melting of icebergs and they keep ports of the Arctic region in northwest Europe ice free even in winter. Okay, now fifth is the oceans are rich fishing grounds. The meeting place of warm and cold currents are rich in marine life beta and due to mixing of warm and cold water उसकी वजह से बेसिकली सबसे बेटर प्लेस है फिशिंग ग्राउंड्स के लिए, रिच फिशिंग ग्राउंड्स के लिए. एंड दीज एरियाज आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड. एग्जाम्पल सीज अराउंड जापान वेयर द वार्म कुरोशियो एंड द कोल्ड ओयाशियो करंट मीट. अनदर एग्जाम्पल इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ओके, नाउ सिक्स पॉइंट बेटा. द मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स रिजल्ट्स इन थिक फोग. जहाँ पे ये दोनों करंट्स मिक्स होते हैं थिक फोग की कंडीशन हो जाती है एंड दीज एरियाज बिकम डेंजरस फॉर द शिप्स बिकॉज क्योंकि नेविगेशन में उनको प्रॉब्लम होती है. एंड द मीटिंग ऑफ वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड लेब्राडोर करंट ऑफ Newfoundland on the eastern coast of Canada produces extremely foggy weather. So it is so deadly that it is called the graveyard of thousand ships. Okay, now seventh point beta. Oceans and seas are vast storehouses of salts and minerals. Ocean water आपको पता है saline होता है, so that's why vast storehouses of salts and minerals. Huge petroleum deposits are found in some offshore areas. Example Bombay High in the Arabian Sea. Now the eighth point beta. The oceans hold an important place in the hydrological cycle. They are the main source of moisture in the atmosphere. Basically सबसे ज़्यादा पानी ओशन में है तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन भी ओशन से होता है. So that's why they are the main source of moisture in the atmosphere. Now the last point, tidal waves can be used to generate electricity. और tidal waves को basically हम किस में use कर सकते हैं? To generate electricity. Okay, the last topic beta. On 22nd March every year we celebrate World Water Resources Day. But specific themes like efficiency of water resources are taken up every year. But are we conscious of saving water?
saving our invaluable water resource, or we are overusing water resources and even wasting it, beta. We are polluting rivers by discharging waste into them, and we have been polluted parts of oceans and destroyed marine life by oil spills in some areas. Like example, great rivers like the Ganga are slowly dying. Why? Experts have predicted that Ganga may change into seasonal river. Why? The source of Ganga, Gomukh Glacier, is receding. खत्म होता जा रहा है. Why? It is also melting faster due to global warming. So the main problems is global warming and the pollution. Added to it is the main problem of pollution in its source areas. We are ourselves turning our life, giving rivers into टॉक्सिक स्ट्रीम्स. उन्हें टॉक्सिक बनाते जा रहे हैं हम, क्योंकि उसमें इतना सारा कचरा हम रिवर्स में मिक्स कर देते हैं. सो दैट इज़ वाई they are harmful for us also. And the increased rate of global warming is melting glaciers. Glaciers melt हो रहे हैं, so it is increasing the sea level, and this means that saline sea water level is rising at the expense of fresh water resources. That means saline sea water तो increase हो रहा है at the expense of fresh water resources. That means हमारा जो fresh water just like rivers है वो dry होती जा रही हैं और seasonal river बनती जा रही हैं. So that's why saline water हमारे लिए useful नहीं है, not fit for us. So if we want that life should continue on the earth, we have to conserve every drop of water. And as drop of water makes on an ocean, every drop counts. So this much is for today. Now your term 1 syllabus is also completed. Thank you. Have a nice day.